Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री टीकेआर अरुण जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम अरुण। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। GST revenue registers 12% surge in May 2023 as compared to April. Wheat procurement in ongoing Rabi marketing season surpasses last year's total procurement by 74 lakh metric tons. And key domestic indices end with marginal losses. Sensex closes at 62,429 points. Nifty settles below 18,500 level. देश में इस वर्ष मई महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल की तुलना में 12% बढ़ा। चालू रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीदारी पिछले वर्ष इसी मौसम की तुलना में 74 लाख मैट्रिक टन बढ़ी और घरेलू शेयर बाजार में आज हुई बिकवाली प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ हुए बंद। India witnessed a substantial increase in its goods and services tax GST revenue in the last month, reaching a total of 1,57,090 crore rupees. The figure noted a 12% surge compared to the same month last year. It comprises 28,411 crore rupees of CGST, 35,828 crore rupees of SGST, 81,363 crore rupees of IGST, and 11,489 crore rupees of cess. The government has settled 35,369 crore rupees to CGST and 29,769 crore rupees to SGST from IGST. The total revenue of the centre and the states in the last month after the regular settlement is 63,780 crore rupees for CGST and 65,597 crore rupees for the SGST. Arun, what is this increase or 12% surge indicative of? Is this the compliance factor that has gone up, or have the businesses surged, or they are doing well? So businesses haven't really been doing as well as we would like them to, but compliance has improved and inflation has been strong. See, if you look at the GDP data that was released on the 31st, the increase in the gross value added in nominal terms was 15%, meaning whereas the increase in real terms was only 7%. So there's an element of inflation of 8% which has pushed up all values. So that is one major reason why we have this increase in GST. At the same time, the government has been cracking down on evasion, false claims, shell companies set up to collect input tax credit. So there is a degree of improvement in compliance as well. But if you look at the real manufacturing growth, that has been fairly poor in the last 1 year. So that is not the real reason why GST is robust. यहाँ पर अरुण सर, हम ये समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर यदि हम एक ग्राफ देखें तो जो जीएसटी का संग्रह हो रहा है वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। पहले जो एक फ्लक्चुएशन हम देखते थे, उतार चढ़ाव देखते थे, वो अब नहीं है, लगातार सतत आगे की ओर ही बढ़ रहा है। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और जो राजस्व संग्रह हो रहा है वो बढ़ने की ओर आगे जा रहा है।
तो अर्थव्यवस्था तो ठीक ही हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा ये राजस्व व्यवस्था जो है वो सीधी हो रही है जी। कंप्लायंस इज इंक्रीजिंग, दी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वो उसका बल ज्यादा हो रहा है, उसका ताकत ज्यादा हो रहा है और हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, यही उसका नतीजा है। यानी कुल मिलाकर जो पहले छिपा ली जाती थी राशि वह अब बहुत हद तक रुकी है, इस कारण से राजस्व में वृद्धि लगातार हम देख रहे हैं। उसमें सिर्फ ये और एक बात है, ये पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे छोटे मोटे कंपनियां जो है वो बहुत बंदी हो गई और प्रोडक्शन हैज शिफ्टेड टू मोर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, लार्जर कंपनीज हु आर एक्चुअली मोर कंप्लायंट। When more production is taking place in compliant, larger organized sector companies, naturally tax collection तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में वर्ष 2023-24 के रबी विपणन मौसम में अब तक 2 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हो चुकी है, 2 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन, जबकि पिछले साल इसी मौसम में यह कुल खरीदारी 1 करोड़ 88 लाख मीट्रिक टन थी। यानी पिछली बार की तुलना में उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई है गेहूं की खरीदारी में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का सम्मिलित भंडार 5 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन से ऊपर पहुंच चुका है, जो देश में खाद्य अनाज की आवश्यकताओं से पर्याप्त मात्रा में अधिक है। खरीदारी से 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। चालू गेहूं खरीदारी अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इन किसानों को 47,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। यानी देश हम मान के चलें कि जो हमारी जो अनाज ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में इस बार यानी कोई समस्या, हालांकि विगत में भी नहीं आई है समस्या, लेकिन अब हम पर्याप्त भंडारण की दिशा में बढ़ चुके हैं। ये एक अंडरस्टेटमेंट है, मतलब जी क्या बोलते हैं, लघुक्ति। ये हमें इतने ज्यादा गेहूं और चावल की जरूरत है ही नहीं, जितना चाहिए उसे बहुत ज्यादा हम उसका उगा रहे हैं। उगा रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सरकार ने वो फार्म लॉस ले आने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पॉलिटिकल ये मामला हो गया, वो उसको विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन इतना ज्यादा गेहूं और चावल की उत्पादन करते रहे हैं, जबकि हम ऑयल सीड्स और पल्सेस इंपोर्ट करते जा रहे हैं। ये थोड़ा इम्बैलेंस है हमारे एग्रीकल्चर में, ये ठीक करने में थोड़ा और कोशिश होना चाहिए। यहाँ पर अरुण साहब, यहाँ थोड़ा और इसे हम समझना चाहेंगे किसानों के हित में ही। आमतौर पर जो एमएसपी है उसके चलते खास किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, क्या उस पर हमें सजगता से ध्यान देने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। यानी किन किन क्षेत्रों में हमें अपने फसल चक्र को बदलना चाहिए या उत्पादन की नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता आपको लग रही है? अब हमारी स्थिति 1960s और 1970s में जो थे वो नहीं है। जितना अनाज हमें चाहिए उसे बहुत ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, और वो सिर्फ प्रोड्यूस करके सरकार खरीद के अपने गोडाउन में उसको स्टोर कर लेते हैं। वहां वो खराब जाता है या चूहे आके खा जाते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, ये सब हो जाता है। हमें इतना अनाज की जरूरत नहीं है। जो हमें नहीं है, जिसके लिए हम अब भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, बाहर से उसका क्या बोलते हैं, आयात करते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। मतलब ऑयल सीड्स, हम दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल सीड का इंपोर्टर है। फिर पल्सेस, उसकी भी हमें शॉर्टेज है। हमारे लोग दाल के लिए बहुत बड़ा दाम देते हैं, जबकि उसका अगर प्रोडक्शन यहाँ बढ़ जाते तो इतना दिक्कत नहीं होती। तो होना चाहिए कि गेहूं और चावल के जगह लोग पल्सेस, दाल और ऑयल सीड उगाएं। इसी तरह की कोशिश हो रही है। So in all this, the marketing efforts to procure seems to have played a very major role. Opening of procurement centers at the village and panchayat level, and also the farmer producer organizations have also helped in procuring the wheat. So this is a step in a right direction that the government has taken by opening up so many procurement centers for wheat. See, एक तरह से देखा जाए, this is actually justice. Earlier, only Northwest India got the benefit of procurement.
Punjab, Haryana, parts of Western UP. Okay. Bihar sees no procurement. Earlier, Chhattisgarh saw no procurement. Andhra Pradesh saw no procurement. Now, to some extent, all these areas also cease procurement. So the farmers there also benefit from the government's MSP and the money spent on food subsidy. ये सही बात है, लेकिन मान लीजिए if we produce only shoes for the left foot and not shoes for the right foot, if you keep on expanding factories for producing just the left foot, is that a great thing? तो procurement के लिए अलग अलग सेंटर बना रहे, मतलब FPO वगैरह बना, फार्मर की कंपनी बना रहे, अच्छी बात है, लेकिन I would be happier if they were procuring oil seeds and lentils, pulses. But Arun, wheat and rice happens to be the staple diet of yes. Of the government's own release says yeah. it is already in excess. We have 59 million tons in our stocks. But we have to keep something of this So in buffer as well. Yeah, we have buffer stocking norms. So despite that, you think Over and above the buffer stocking norms, we are accumulating these stocks, Okay. which are actually not very useful. यानी कुल मिलाकर हमें जो लोक लुभावन आवश्यकताएं हो जाती हैं, उनसे ऊपर उठकर जो वास्तविक आवश्यकता अर्थव्यवस्था की है, इकोनॉमी की है, उस पर ध्यान देते हुए विविध फसलों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए ताकि इसका लाभ हो। आइए चलें अब शेयर बाजार की ओर। Before that, let's inform you that the government has extended the deadline for submission of applications for the National Startup Awards 2023. Applications have been made live from 1st of April this year, and the deadline for submissions is now extended to the 15th of this month. The extension in deadline allows aspiring entrepreneurs and enablers additional time to showcase their innovative solutions and profound societal impact. The National Startup Awards 2023 will commemorate innovations from all corners of the country, aligning with the vision of Vision India at 2047, which charters the path for India's transformation into a developed economy driven by the spirit of Amrit Kal across key themes. आइए अब चलें शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही, हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली तेज भी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स बिकवाली के दबाव में 62,450 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। उधर निफ्टी भी 18,500 के स्तर से फिसल गया। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 194 अंक घटकर 62,429 पर बंद हुआ। 62,429 पर यह आज बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 47 अंक टूटकर 18,488 के स्तर पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% लाभ के साथ बंद हुआ। Key domestic indices today closed with marginal losses amid mixed cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 62,450 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled below 18,500 level. The Sensex declined 194 points to finish at 62,429. The Nifty also slipped 47 points to end at 18,488. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.1% and the small-cap index also rose 0.6%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 companies appreciated while 12 declined. Tata Motors climbed 1.7%, Hindustan Unilever rose 1.4% and Asian Paints gained 1.3%. On the other hand, Bharti Airtel declined 3.4%, Kotak Bank fell 3.3% and ICICI Bank slipped 1.3%. In sectoral indices at BSE, 10 sectors logged gains while 10 witnessed losses. Realty index rose 1.2%, healthcare sector added 0.8% and utilities index ended 0.7% up.
On the other side, Bankex and metal indices fell 0.8% each. Energy sector slipped 0.7%. The overall market breadth was positive as shares of 2,078 companies rose, while 1,458 companies declined. A total of 125 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 31 पैसे मजबूत हुआ, 82 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया के 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 104.11 पर चल रहा था। अरुण जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शुरुआत में तो थोड़ी तेजी दिख रही थी, लेकिन बाद में जो बिकवाली का क्रम शुरू हुआ तो लगातार बाजार नीचे ही आकर बंद रहा। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, मार्केट ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उस स्टार्टअप अवार्ड के बारे में बोले जी। स्टार्टअप का दिस इज समथिंग दिस गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग रियली वेल। नाउ फॉर डिफेंस इंडस्ट्री, the government is using the startup ecosystem very effectively to produce various things we have been importing so far, and there is real genuine excitement in the startup system in contributing to a defense sector, and we are trying to reduce our dependence on imports and increase local production. Isme startups are being used very creatively. Now we have startups in the space sector. We saw the launch of a private rocket by a rocket company. So startups are something we should actually be more excited about. Of course, they are not listed companies as yet, and only large funds, private funds, have access to these companies. They can buy their shares, they can take part in their growth, and eventually when they list, then the public will be able to partake. But we must be very proud of our startup ecosystem. So as Arun is saying, so if you are a startup, make sure 15th of this month is the deadline and you must submit your entries, Yes. your applications for the National Startup Awards before 15th of June. Yes. And coming back to how the markets behave today, the realty sector rose 1.2%. What's your take on the sector which has gone through the consolidation for the last 9 to 10 years? Do you think a sector like this is also expected to emerge out of the consolidation phase? See, अब अगले 1 महीने में or next 1 year, how things will go is unpredictable. But long term, reality can only be a tremendous driver of growth and prosperity. इंडिया अब भी एक शहरी राज्य नहीं है, लोग ज्यादातर गांव में रहते हैं. Around 65% of Indian population live in towns. No country in the world prospers with people living in villages. People move to towns. बात साफ है. नए नौकरियां जो है इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में वो शहर में होते हैं, तो उन जॉब को लेने के लिए लोग विलेज से शहर आ जाते हैं. So this will drive urbanization. If we expect 50% of India's population to live in towns, that means an additional 25 crore people, 250 million people, additionally moving from village to town. ये लोग कहाँ रहेंगे? You have to build accommodation. You have to build office spaces. You have to build hospitals, schools, shopping malls, entertainment centers. So it's a huge construction boom that is waiting to happen when India urbanizes. And India cannot prosper without urbanizing. So this is a sector that definitely will do well. So I wouldn't be surprised if reality really takes off. Okay. So just a while back, Indian markets along with global markets were rallying in anticipation that probably the data is showing that inflation has peaked out and that worry is over. Then came Fed and our own central bank saying that this is just a pause, not a pivot. Yes. So, and market got a bit nervous. So in reality, according to you, Arun, what is the reality that is there in the market? The reality is that the Western economies are seeing the lowest levels of unemployment in recent memory. America with 3.3%, 3.4% unemployment.
जर्मनी में है 2.9%, इंग्लैंड, इन सब राज्यों में unemployment is very low, which means labor market is very tight. So they can't afford to fire people, कि लोग अगर वापस नहीं आए, and they can't say no. Inflation बढ़ रहा है, so people are demanding higher wages. जब लोग एक रेस मांग रहे हैं, because of the tight labor market, कंपनियां दे रहे हैं. When people are getting an increase in their wages, they are going spending more in the market. So demand is not coming down, so prices are still going up. So the strong employment data and the tight labor market and consequent rise in wages is keeping demand buoyant in America. So what about this consumption that you just mentioned? What is the consumption scenario in India? In India, it is not growing as well as in the West, since the interest rates that matter for the world are actually American interest rates primarily, and they are driven by American consumption. American consumption is still going strong, and therefore the Fed will have to keep raising rates to bring prices down. The only way you can actually bring prices down in the US is by allowing immigration. और immigration Fed के हाथ में नहीं है, वो पॉलिटिशियन के हाथ में, सरकार की पॉलिसी के ऊपर है, और उस पर बहुत दबाव है पॉलिटिक्स में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में. उससे इंडिया में कंजम्पशन कैसे इंक्रीज करने क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से इंक्रीज होगा. हमारा कंजम्पशन हैज बीन कंस्ट्रेन्ड बाय रूरल मिसरी, बिकॉज टिल डिसम्बर people who were taking part in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in large numbers. The offtake from that was very high. It is coming down only after January, which means rural distress is coming down, and once it comes down, the demand for consumption demand will go up. And so I am sure it will go up in India, but because of this, it has been constrained. That's why the data shows that private consumption has been low in the last 1 year. अरुण जी, यहाँ पर एक रोचक कह लें कि स्थिति उभर कर पूरी वैश्विक दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है कि एक और जो रोजगार के आंकड़े हैं वो अपने सर्वोच्च स्तर पर हैं, दूसरी ओर महंगाई भी सर्वोच्च स्तर पर है, और अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के नीचे जाने के आसार हैं. जर्मनी में मंदी तकनीकी रूप से घोषित यानी कही जा रही है कि तकनीकी रूप से मंदी की चपेट में आ गया है. यानी कुल मिलाकर वास्तविक स्थिति कैसी है? ये मंदी तो अपने आप तो नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के किया गया ताकि इन्फ्लेशन पे काबू आए. Okay. So they were trying to control inflation and therefore raise interest rates to dampen economic growth, and finally you had a recession in Germany. Now Germany, interestingly, has recently changed its policy on immigration. They are trying to get more workers in because they realize in this conditions of very tight labor market, they really cannot control prices or even keep the economy going. They are actually looking to invite technology workers from India, but also other kinds of workers from around the world. The US is not doing that. So till they allow in liberal immigration, their prices will continue to be tight, and they will keep raising rates. And we were talking about consumption. So yesterday when the data came in, it said that the private consumption, which accounts for nearly 60% of the economy, grew 2.8% year on year, compared with a revised 2.2% in the previous quarter. So did much better, of course, and you said it is going to, as we go along, going to pick up further. 2.8% is indicative of what? Does it mean that the inflation continues to is going southwards, and therefore growth is of 2.8%, and that's why consumption is going up? I don't think 2.2 in one quarter. 2.8% was the figure year on year. But I think consumption grew some 8% last year. But you know, when the overall economy grew 15%, if consumption grew 8%, it's not very good, right? Yeah. So consumption has to grow. That is when, see, India is not like the US. Many people live on the margins of subsistence or poverty. So यहाँ पे if consumption comes down, it's a matter of grave concern. So we have to see improvement in consumption. ये तो होना ही है. आइए अब चलें
सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों में एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की लिवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.8% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कोई उतार चढ़ाव आज नहीं देखने को मिला। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक वहां भी लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4%, फ्रांस का CAC 40 0.7% और जर्मनी का डेक्स 1.2% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। The House of Representatives has approved a deal to allow the US government to borrow more money just 5 days before the world's biggest economy was due to start defaulting on its debt. The Fiscal Responsibility Bill to raise debt limit and cap government spending in the US was passed by a wide margin last night in the House. 314 votes were cast in favor and 117 against it. The bill will now move to the Senate for a vote before US President Joe Biden can sign it into a law. The government is forecasting to hit its borrowing limit of $31.4 trillion on Monday. In a tweet, Mr. Biden said the House took a critical step towards prevention of default and protect America's hard-earned and historic economic recovery. The US President urged the Senate to pass it as quickly as possible so that he could sign it into a law and the US could continue building the strongest economy in the world. Very briefly, if you could explain the Fiscal Responsibility Bill. This is like saying they decided not to commit suicide. Does it actually improve things a whole lot? Things are as before, right? But that they were planning to commit suicide, they did not commit suicide is a great thing. Because if the US government defaults on its debt, US government treasuries will lose their preeminent status as the most stable, valuable. So what repercussion would that have on economies like that of India? So it's the fact that this danger has been averted will get people to have a sigh of relief, and that is the relief. Otherwise there would have been mayhem. Otherwise there would have been mayhem, absolute mayhem. Okay. So that has averted, that's all. Moving on, the US stocks closed down yesterday as a deal to raise the federal debt ceiling headed for a crucial vote in Congress, while unexpectedly strong labor market data rattled investors who fear the Federal Reserve might hike interest rates again in June. The Dow Jones Industrial Average declined 0.4% and the Nasdaq Composite and the S&P 500 fell 0.6% down. And also, oil price steadied today. In intraday trade, Brent crude was trading at $72.10 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $67.62 per barrel when reports last came in. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 460 रुपए घटकर 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। जुलाई में आपूर्ति वाली चांदी भी 415 रुपए कमजोर होकर 71,685 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्यों में नरमी थी। सोने का मूल्य न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में $1,984.40 प्रति औंस के स्तर पर चल रहा था। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Arun, for being with us. And before we close, the headlines once again. GST revenue registers 12% surge in May 2023 as compared to April. Wheat procurement in ongoing Rabi marketing season surpasses last year's total procurement by 74 lakh metric tons, and key domestic indices end with marginal losses. Sensex closes at 62,429 points. Nifty settles below 18,500 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.